So today's video we're going to talk about medicine for babies. हम बेबीज को दो केसेस में मेडिसिन देते हैं. वन इज जब बेबी को विटामिन देना होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबीज, एंड सेकंड ऑफ कोर्स जब बेबीज की तबीयत खराब हो जाती है. इज वन पॉइंट टू नोट, ये वीडियो इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस. आप प्लीज जो भी मेडिसिन मैं बताऊंगी वो आप पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा. ओनली इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन आप तभी लीजिएगा. हमने भी ये मेडिसिन तभी अपनी बेबी को दी थी जब हमारे डॉक्टर ने कहा था कि आप ये वाली मेडिसिन और इस ब्रांड की मेडिसिन अपनी बेबी को दे सकते हो. दो दीज आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट आप पहले अपने डॉक्टर से पूछिए और फिर ही अपनी बेबी को ये मेडिसिन दीजिए. Be a part of the Chai family by subscribing to our channel and also hit the bell icon so you never miss an update. Now first let's talk about vitamin. Our doctor had prescribed us to give vitamin D3 drops to our baby. As we all know, vitamin D is required for good health and also strengthening our bones. Vitamin D also helps in absorbing calcium. And vitamin D का जो main source of energy होता है वो होता है sunlight, and it's also present in a few food items. But because हम अपने बेबी को डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज करते नहीं हैं, बिकॉज डायरेक्ट सन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर देम एंड दे डोंट ईट, इसलिए बेबीज में विटामिन डी जनरली कम ही रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू सप्लीमेंट इट विद द विटामिन D3 ड्रॉप्स. ऑल्सो विटामिन डी बेबीज को थ्रू ब्रेस्ट मिल्क भी मिल सकता है, बट यू नो बिकॉज हम वुमेन का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम खुद सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं. वी आवर सेल्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, तो हम आवर सेल्स वी कांट पास इट ऑन टू आवर बेबीज. दैट्स व्हाई दीज ड्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट. These are drops that we have been prescribed from our doctor. These are Ultra D3 drops, optimum strength. So this is what we have been giving since the start. And these are available over the counter. If your doctor prescribes them, you can start giving these to your baby. Next, let's talk about the medicines for the tummy. जब बेबी को इंडाइजेशन है, गैस का प्रॉब्लम है, बेबी कॉलिक है, बेबी के एब्डोमिनल में पेन है, तब आप क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं. Whenever babies have indigestion, stomach ache, gas, they swallow air and they have air bubbles in their tummy, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने हमको प्रिस्क्राइब किया था कि हम बेबीज को कॉलिक एड दे सकते हैं. दिस इज द मेडिसिन दैट वी हैव बीन गिविंग एंड डॉक्टर्स ने हमको प्रिस्क्राइब की थी, एंड इट्स अगेन अवेलेबल ओवर द काउंटर. यू कैन चेक विद द डॉक्टर कि आप कितना डोसेज अपने बेबी को दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कंडीशन, बट दिस इज हेल्पफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट. Second is gripe water. Gripe water is a homeopathic medicine and it's also helpful for similar reasons: indigestion, stomach ache, gas. But जो इसका recommendation है थोड़ा सा contradictory रहता है. Our doctor had said a big no for gripe water. They said gripe water मत लीजिए. The history behind this is, initially जब gripe water बनता था उसमें कुछ percentage alcohol mix हुआ करता था, जिससे babies थोड़े से sleepy हो जाते थे, and it is totally dangerous for babies. That's why I think till today the doctors also kind of avoid giving gripe water. बट कहते हैं कि आजकल के जो ग्राइप वाटर का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें अल्कोहल नहीं रहता है, एंड सम पीपल स्टिल रिलाई ऑन ग्राइप वाटर एंड गिव देम. बट बिकॉज आवर डॉक्टर हैड सेड नो, हमने ये हार्डली यूज किया है. आई रिमेंबर वी गेव इट जस्ट ट्वाइस व्हेन वी वर रियली लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन फॉर आवर बेबीज कॉलिक. इट डिड हेल्प, बट बिकॉज आवर डॉक्टर हैड सेड नो, हमने इसको यूज करना छोड़ दिया था. Now let's talk about the things we can use for babies if they are not feeling well, they have fever or they have a severe cold. Now first is जब बेबी को फीवर होता है जनरली, और कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी बेबीज को फीवर आ जाता है, दे डेवलप फीवर. उस केसेस में बेबीज के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरासिटामॉल्स आते हैं. यू कैन चेक विद द डॉक्टर कि आप कौन से ब्रांड का पैरासिटामॉल दे सकते हो. व्हाट वी गिव आवर बेबी इज टाइलेनॉल, बट वी आर इन कनाडा राइट नाउ, तो इसलिए यहाँ पे वाला ब्रांड चलता है. प्लीज ऑल्सो ऑलवेज चेक द ब्रांड विद योर डॉक्टर. जो ब्रांड का मेडिसिन वो आपको दें आप वही लीजिएगा. ओवर द काउंटर आपको काफी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक योर डॉक्टर knows best. Now cold के लिए आप क्या कर सकते हैं. बेबीज को कोल्ड होता है उनकी नोज ब्लॉक होती है, इवन दे हैव कंजेशन एंड लॉट ऑफ म्यूकस बिल्ड अप इन देयर नेजल पैसेज. उन केसेस में अपने बेबी के नोज में ये सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं. सो दीज आर द ड्रॉप्स फ्रॉम नेजो क्लियर. दीज आर बेसिकली नॉट समथिंग टू बी गिवन टू द बेबी टू ओरली कंज्यूम, बट ये नोज में डालते हैं. इससे क्या होता है, पुटिंग दीज ड्रॉप्स काइंड ऑफ मेक्स इट इजियर फॉर देम टू क्लियर द नेजल पैसेज एंड मेक्स ब्रीदिंग अ लिटिल इजी. तो आप ये बच्चे को दे सकते हैं. You can put 2 drops each side and you can give it multiple times in a day. हम कम से कम 6-7 बार बेबी की नोज में डाल देते थे, and it did relieve her from the congestion and the खड़खड़ होता रहता है नोज में, उससे काफी इससे रिलीफ मिलता था. This is nothing but saline drops, salt water जो होता है, it's just that. तो आप ये यूज कर सकते हैं. सेकेंड हमने कोल्ड के लिए देखा होगा, जब कोल्ड होता है हम बड़े भी विक्स वेपर रब लगाते हैं. दैट इज अ बिग नो फॉर बेबीज. बेबीज के को आप कभी भी विक्स वेपर रब या कोई भी वेपर रब मत लगाइए. वेपर रब्स में कैम्फोर होता है विच इज वेरी डेंजरस एंड काइंड ऑफ लीथल फॉर बेबीज. तो आप उसमें
कभी भी वेपर और बेबीज में मत लगाइए. However, as a solution to this, Vicks has come out with Vicks Baby Rub. It's not a vapor rub, it's a baby rub, which is a non-medicated formula. This is the bottle. It comes with a pink cap. इससे आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा. Now, this contains aloe vera, coconut oil, fragrances of lavender, rosemary, eucalyptus. It does not say that it has camphor. Secondly, बॉटल पे ही लिखा है 3 months से छोटे बच्चे को आप ये वाला विक्स भी नहीं लगा सकते हो. This is only to be put on babies above 3 months of age. Also, this need not be put on baby's nose or face or neck. जहाँ भी बेबी अपने आप को टच कर सकता है वहाँ पे आप प्लीज इसको मत लगाइए. द बेस्ट वे टू पुट इट इज कि आप बेबीज के फीट के नीचे आप इसको लगा के रख कीजिए एंड पुट सॉक्स ओवर देयर फीट. दैट कैन गिव देम लिटिल रिलीफ. बट इसको कभी भी आप फेस पे, नेक पे या कहीं भी इस जगह पे मत लगाइए वेयर बेबी कैन ईदर टेक इट इन, इनहेल और टच इट. पैरों पे लगाइए. दैट्स द बेस्ट वे. Next is, guys, it's not really a medicine, but something that I still put on my baby is Odomos Naturals. Now, this is something that I put on my baby, when we're going out for a walk late in the evening, or at a place जहाँ पे बहुत सारे mosquitoes हो सकते हैं. So mosquitoes के लिए there are 2 ways. One is आप ये Odomos Naturals लगा सकते हैं. I checked with my doctor and they said Odomos is very harmful for baby, but Odomos Naturals वाले जो Odomos आती है वो आप लगा सकते हैं. Also, you put it at areas where babies can't, touch or take it in. I would generally put it on my baby's elbow, behind the ear, and on the calves, ताकि babies के direct touch में वो ना आए. So I've used this and थोड़ा सा helpful रहता है. And अगर आपको short while के लिए बाहर जाना है, you can use it. If you don't want to put any ointment on your baby, then there's another way. You can, get these mosquito repellent patches and put them on your baby's clothing. आप बैक पे लगा दीजिए, स्लीव्स पे लगा दीजिए. And this also helps. ये आपको एक पैक मिल जाएगा और इससे भी mosquitoes काफी दूर रहते हैं. So you can use this as well. Not really a medicine, but something that you can apply on your baby. So guys, this was it from me. I hope this was helpful for you. Again, before I leave, please ये सब medicines आप तभी लीजिएगा जब आपके डॉक्टर से आपने चेक किया है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करके बताया है कि आप कौन सी मेडिसिन, कौन से ब्रांड की मेडिसिन और कितना डोसेज बेबी को दे सकते हो. मे बी आउट ऑफ दीज थिंग्स जैसे कि आपको X देना है या Y नहीं देना है, या ये देना है लेकिन आपको किसी और ब्रांड का देना है, दैट्स ऑल फाइन. Doctor knows your baby's history and your baby's case better than of course I do. So please check this with your doctor. And if you have any questions, please write in the comment box below and come back with the answers. And please like my video and subscribe to my channel. And I'll come back soon with another such video. Bye bye.